मेरा जी all my friends here and alumni members. First of all, thanks a lot to everybody. You have said some very good words. Well, anyway, those words are not required because anybody who would be coming to his own university would be the highest level of honor which one can think. But the only difference is that time we could be purely non-vegetarian. Now we are forced to be vegetarian because. Now I find a lot of girls there. At our time there were no girls. Yeah, it was very sad. That was life. उਦੋਂ एक शेयर आया सीगा रिसेंटली दोबारा आया ऑन द इंटरनेट उन्हें थोड़ी गलबात करते ध्यान आया तू जो मर्जी मांग ले हर चीज हाजिर है मेरी पर एक जान ना मांगना क्योंकि तू ही तो जान है मेरी now the problem was I had to share अब सुनाएंगे इसको 4 साल मन में लेके शेयर घूमते रहे got into a job another 4 years बड़ी कोशिश की यार कोई ना कोई could find somebody जिसको शेयर सुनाए finally got married मैं यार अपनी वाइफ को शादी हुई शेयर सुनाया no response दोबारा सुनाया no response मैंने कहा समझ नहीं आया कहती मैंने कहा हमारे 8 साल से मैं शेयर लेके घूम रहा हूँ हमारे कोई लड़की नहीं थी मैं क्या करूँ शी सेड वो तो ठीक है आपके लड़की नहीं थी हमारे कॉलेज में लड़के तो थे ना I was just entering the college, I was passing the canteen, it still looks the same. So I don't know whether you guys are going through ragging or not. Those times ragging was one of the prime things of entering an engineering college. छोटी छोटी चीज़ें होती थी रेलगाड़ी बन जाओ कमीज देते बनान पालो और इमेजिनरी चेयर पे बैठ जाओ जोक सुना दो शेर सुना दो and ultimately कपड़े उतार दो I don't think so we are lucky enough to go through that but anyway so मेरे यार आया मैंने ना उधर बड़ा शौक होता थी ऑब्जर्व करना so I used to observe कि जब किसी को दूसरा सीनियर थोड़ी रैगिंग कर रहा है the more shy you feel they'll rag you more जे तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ I was observing ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਤਸਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ he would be he has to go through the whole process. But somebody who starts from the belt, he was asked to leave. Okay. So I was a day scholar. So I was काम भी ज़्यादा सीखा. चलो जब वो थोड़े ज़्यादा देखना है. What happened I did? सर की जोर सुन लो राजनीति को जोड़ करते थे तो बस सुनाता था सर एक शेयर है या तो 2 शेयर आ गए किसी में शेयर है सर कपड़े लावा नहीं तो बड़ा यार सर भाई समोसा खिला दो जी क्या यार कोई समोसा नहीं सर प्लीज समोसा खिला दो कपड़ा लाना नहीं एंड फाइनली वर्चुअली क्लोज टू हैपन उन्होंने कहा यार वो बीमारी को समोसा खिलाया देने जाना एंड सर समोसा बना रहे ठंडा बना लो जी समोसा फिर खाया जाएगा सीनियर यूज टू नो कि ऐसा बीमारी है कि इन्हें 2-3 दफा आके 2-3 समोसे रोज खाने में बंदा पीना चाहिए सो आई डोंट नो हु वाज रैगिंग होम बट दैट्स वाज probably my first learning curve on to become an entrepreneur that's how it started
बाकी I belong to this place. I am a core battalion. I am born up here. सारा एजुकेशन मेरी अच्छे सी probably I was one of the very few ones जिसको 7वीं क्लास पता सी कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है और भी इलेक्ट्रिकल करनी है और थापर कॉलेज की करनी है. I had no other option. So I didn't know that any other college even existed beyond Thakur College. So मैंने एक ट्रांसफार्मर बड़ा अट्रैक्ट कराया करता सी उਦੋਂ भी कि किल ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲਪੇਟ ਲਈ और उधरों लो वोल्टेज आ गई मेरा बल्ब क्यों नहीं फूक रहा. So that used to fascinate me and that time I knew I have to be an engineer. But that doesn't mean that, see, I've been doing lot of things, lot of interesting things, but everything required hard work, lot of hard work. Let me tell you, all of you, the most important thing which you are gonna need in your lifetime is hard work. There is absolutely no substitute. I do believe in luck also. Luck factor is also very important. But you see, सारे अपने लोग देखो, how many people in India are able to do engineering? And out of that, how many people are able to make to Thapar? So थोड़े सारे का luck factor इतना ऊंचा है कि you don't need any more luck factor. And then the way the college is growing, while going through I was seeing. At that time there used to be only 3 faculties, electrical, mechanical and civil. So I am told there are 29 of them. So which is something, well, it is highly appreciable. Dr. Mehta, you and your team have been doing a great job. And all the students have been doing a great job. So today, Thapar is known everywhere. In fact, I was surprised that even in Singapore, when you apply for a job, Thapar College is one of the recognized college which gives the priority over other colleges. Now college, if you think college can teach you everything, no. They can teach you to a certain level. The rest of it, you have to learn yourself. You have to be practical. College has given you those formulas which probably you will never use in life, maybe 5% of those. But still, you have to be successful. All of you, okay, you are having good luck. You are passing out, which is something very good. So now, everybody wants to grow. So what do you need to do? You have to be practical. Well, even if you are in a job, you start up your own. Some people may be lucky, they may even have their parents, some business which is running or a factory which is running, you can join. But still, you really need to, there are few things which I think are very important in life. The first thing I feel is innovation. Well, when I was young, मैं ना सोचा करता सीगा कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है, मुझे नींद नहीं सी आया करती. अच्छा ये जड़ी लाइट है ना यार, ये लाइट जल रही है. I need only light for reading here. बाकी लाइट का मैं क्या करा यार, ये छत जड़ी है ना सवेरे गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा. मैं how do I use this heat or what can I do the cheapest way to make it cooler? Auditorium में बैठे हो with the same air conditioning, how do I make it more cooler or better for everybody? But there has to be some innovation, some force in you, some strength in you. All of you have it. Only thing is you have to start using it. That strength you have to live with it. You should not be able to sleep. You should not be able to do anything. You have something in mind. You have to grow it. You must grow it. I will give you a very small example. Like everybody else, मैं भी बड़ा सुस्त होया करता था. So सर्दियाँ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ मेरा रजाई का बड़ा प्यारा रिलेशन सी. Now मैंने छाड़ती सी ना मैं रजाई में छाड़ रहा थी. So now every day during winter कॉलेज की पहली क्लास बंद करना भी मुश्किल है क्योंकि अटेंडेंस का चक्कर है. Okay. Now what did I do? That time I am talking of 73, 74. What I did was आया करते थे. अलार्म क्लॉक के पीछे चाबी होती थी which used to have lot of strength जब अलार्म बजता सीगा. So I used that strength, that mechanical motion. एक दूसरा अलार्म में बजना उसके बाद रेडियो में ऑन हो जाना. प्री डेटा स्टेशन जड़ा भी पहला प्री सेट स्टेशन है. 5 मिनट के बाद एक और
I don't know whether you people have seen or not. इको जो हैंड पंप होंगे उनके ऊपर एक मोटर आती है गियर वाली जो कि हैंड पंप को गिरती है. So I had that motor and that would pull my Rajai up. Okay, so in the winter I'm all alone around the bed. छोटे साल बाद मैं उससे भी सीख गया कैसे रजाई still you can do something. So the next step was the same machine would start pulling my bed up from the bottom side, and so I had to be on the ground. So since I knew that this is going to happen, I would invariably get up before that last stage would happen. So this was साफ करना है और I never wanted कि मेरा कमरा को साफ करें. Okay, so what I did was मेरे उन्होंने दिनों की गल है टायर आया करते थे पुराने जड़े हैं साइकिल के तो मेरे कमरे जो एंटर करे तो उनको टायर दिया करता था. So the guy who used to clean the room, he would never enter के जी मैं काफी जगह कमरे नहीं जाना ये जगह है कोई ना कोई चीज को गिर भी ऐसा ट्रेंड लग गई है. There are some very small things. But it's only an example. Which you will probably appreciate as an engineer. You can appreciate it very well. उन्होंने आजकल जो कनक वगैरह कटती है देर आर थ्रेशर हार्वेस्टर कंबाइंस आर देयर उन्होंने दिनों थ्रेशर चलिया करते थे. आई डोंट नो एनीबडी ऑफ यू वुड नो दैट और नॉट. छोटी छोटी मशीनें होंगी सी ट्रैक्टर ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ. तो उसके अंदर यू हैव टू फीड इन दी होल थिंग एंड फीड वुड कम आउट ऑफ दैट. एंड दी कॉमन प्रॉब्लम वाज कि उसके अंदर लोग जो सारी रात काम करते थे एंड दी आर्म यूज्ड टू गो इन and it used to get cut by the blade. Normally the hand would get cut, and it used to happen every year in a lot of villages. Okay, so it happened in my village also. One day morning I went, I found this one of the best workers lost his hand. Started thinking. It was a very simple thing. जिस चीज के अंदर जो पा रहे हो अपना सारा मसाला पा रहे हो या रूट पा रहे हो कैंडल बेचना है तो उसे over there we saved the earth, and this thing was considered for a national award. But मतलब ये वाला 14 साल का चीज़ है 15 साल का हो गया. When this was happening, there are so many things around you. Be innovative. You can come up with lot of ideas, lot of great ideas. You have it. It is there inside you. The second thing is understanding. Whatever you have learned, you need to really understand how to practically apply it. तो ये थ्योरम मान लेते हैं जो इसे अपना एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए ए प्लस बी स्क्वायर कर लेता सामने आ जाएगा. मुझे यही नहीं पता कि व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी. इफ यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली अप्लाई इट व्हाट विल द फॉर्मूला डू. यू फील ओ मैन समथिंग इज रॉन्ग. बट नो, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड. You really need to have the understanding of what you have learned. I think it is very important. जिससे कि लोग घोड़ हो रहे तो बात है ना. I think you people have a very strong desire. You should have a very strong desire to surpass them. There's something very good that you can do. Another thing which I found is communication. See, basically you may know everything, you may be able to make a presentation, but you have to sell yourself. जिसमें अपना लोग बच्चों का ही नहीं, जिस थोड़े नाल you know कि एक कुड़ी है, बहुत पसंद है, जिसके फ्रेंड्स से मिला के नहीं जाऊँगे, फिर बढ़िया नहीं जाऊँगे, तो बढ़िया हरकतें नहीं करूँगे, तो फायदा क्या है? Same applies to the girls also. So if they have to distract a guy, so they have to communicate in a way. मतलब जुटी सकते हैं जब कुछ होगा जो भी whatever is appropriate at the moment. So if they don't do it, things will not work. So it's very important that you should have a very strong communication. सारे का एक इंसिडेंट होया मेरी 3rd year ट्रेनिंग हुई 3 months. We were 2 guys. We got a training in Siemens in Bombay. Okay, general manager was called Delhi, and his secretary was so pretty as to see that.
You are the best here. So we go to us and so attractive about that. अरे सारा दिन सोचते हैं ना यार इतना जाके एक डाले सारे एक डाले और now अंग्रेजी सब आती है बोली नहीं जा रही दोनों ने जाना शुरू क्लास शुरू हो जाके गल मतलब रोज का नवा बहाना जाइए इस तरह रोज का नवा बहाना बना के जाना उन्हें पूछना अच्छा अपना which college you are मैं कहना थॉपर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग उन्हें कहना हैंड टेक्नोलॉजी अभी दिल में गया तो रहेंगे we did not encourage even ask a single question मतलब this is what is the communication क्यों सारे ना गलबात करते रही कोई भी गलबात we could not ask कर तो बड़े मायूस हो गए वापस आ गए and you will be surprised the other guy has done PhD in US now and he is a very successful guy over there so but इतने आगे फिर सारे सबसे पहला काम क्या किया था we joined a there used to be college near Mundra college कोई इंग्लिश सिखाया करता था ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ 5-6 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ but that communication helped us a lot so it is very important I remember although ਸਾਡੇ SSC ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਕਿ I don't know some selection board is still common here or not ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ SSC ਦੀ 3rd year ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਲਾਸ and believe me he was the hero of the whole college every teacher every student used to go to pass group discussion में क्या लिखते थे the medical problem was group discussion well साढ़े पाँच में आया कि यार असली असली पढ़ाने जाना पड़ा है या तो बड़ी चीज़ so went for it got rejected हाँ तो चल गया वापस आया then I remember we went to an academy in Chandigarh there was a Sikh gentleman he used to Karnal Dev he used to teach us he taught us that when you go for an interview you should know the next question what the interviewer is going to ask the interview